Yes, good morning students. Today is our chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation, wildlife resources of geography. So let's start it. Land is a basic resource because it is very essential for our living, for our survival. We grow crops on the land, we settle on the land. This is mountain. This is also very important feature for our survival. Land. Land is an important natural resource which covers only 30% of the earth surface. Land का 30% तो हमारे earth surface का 30% is covered by the land, and it provides most of human needs also. It depends upon the physical factors such as topography means the physical feature of that area, soil, that it is a red soil, littoral soil, and these type of soils, and climate also, it is hot, moderate, or cold. Minerals which is available in the land, or the availability of water, and human factors also. The third point, due to excessive use of land for agriculture and construction activities, the major problem of land degradation, landslide, soil erosion, etc. arises. When we use the land in excess amount for construction and agriculture activities, it creates a problem of land degradation, mean destroying of the soil, landslides which we call bhusankalan, and soil erosion. Soil erosion is the process in which the top layer of the earth blows by the help of wind or water. The fourth point, to conserve the land. If we want to save our land, we must promote afforestation, means we should plant more and more trees. Check to overgrease. Overgrazing means the cattle animals, goats, sheep, cow, buffaloes, when they graze, that we should check it that they are not overgraze the land. And the regulate the use of chemical pesticides and fertilizers, because farmers use these chemical pesticides to protect the crops from the pest, and also use the fertilizers to retain its fertility. But if we use it in excess amount, it will degrade our land. So we should, if we want to conserve our land, we should promote afforestation, check to overgraze, and regulate the use of chemical pesticides and fertilizers. Soil erosion by rainwater. Soil, the upper layer of the land surface is called soil. The upper layer, the ऊपर वाली layer होता है, that is known as the soil. And soil formation depends on the nature of the parent rock, means from which it formed, because soil is soil from the rocks. When the breaks it and stuck with each other, then it breaks into smaller pieces, and from that that rock with the soil form is known as a parent rock. जिसमें से वो बनी है, that is known as a parent rock. And also the climate, hot weather, sunny, rainy. Relief features, flora, flowers, fauna, animals, microorganisms which live in that rocks, and the time also. Yes, time is the main thing, because it's not the work of 2 or 3 years. It takes lot of time, thousands of years to make. Third point, deforestation means removing more and more trees. Overgrazing, we know it well. Overuse of chemical fertilizers and pesticides. Rainwash, landslides, and floods leads to soil degradation. So these are the reasons which cause soil degradation, which are destroying our soil. The fourth point, conservation of soil can be done by mulching. Mulching is the layering of organic material on the land so that it retain its moisture. See, this is the mulching. Okay. Contour barriers, make barriers of the stone. These are on the contour barriers. Constructing rock dam, we can make a rock dam. Terrace farming, which is known as सीढ़ी नुमा खेती, is done in mountain areas. Intercropping, one crop, then another, then first one, then second one. This is known as intercropping. Contour plowing, making shelter beds. In this shelter beds, they also they grow these plants, trees, so that they will check the movement of the wind also. Okay, so these are the methods by which we can save our land. This is, you can see in the fourth picture, it is representing that how the land was used and how we are using the land. First, all the land is used for cropping. Then the next 1/4 part is used for the house, and in this one only the fourth part, in the third picture, on the fourth part is used for the cropping, and the last one, whole land is used for the human activities. So this is change in land use over the time. This is mulching, in which the organic material are covered the land surface so that it retain its moisture. Contour barriers, terrace farming done in mountain areas, contour plowing,
intercropping, shelter beds. Now come to the water. 3/4 of the water surface is covered with land. 97% of the earth's surface is covered with the ocean and seas, and 3% is of fresh water. But out of that 3%, only 2%, the 2% is in the form of glaciers and icebergs, and only there is a 1% of fresh water for the human consumptions. So we should save our water, because we are wasting our water, we are destroying our water, we are polluting our water. If this will happen year by year, अगर ऐसा होता रहेगा, then we should not have fresh water, because 97% in the ocean, only 3% is there, in which 2% is the form of glacier and ice, 1% will remain, and 1% we are wasting, we are polluting it. The chemicals coming out from the industries, it is wasting our water. We can see in the lockdown also, there is no pollution in river, no pollution. The Ganga river is get clean हो गई. इतने सारे कैंपेन्स करने के बाद भी यमुना एंड गंगा रिवर नॉट क्लीन, वो क्लीन नहीं हो पाए थे. बट in the lockdown, during the lockdown period, the people are not working, industries are not working, factories not working. Because of that, rivers get clean. So we humans are destroying our resources. Okay. The third point, discharge of untreated sewage, agriculture chemicals and industrial effluents in water bodies cause water pollution. Water conservation can be done by afforestation, means planting more and more trees, adopting effective techniques for irrigation. Yes, we can use effective irrigation methods so that water will not be wasted, it should be saved, and promoting rainwater harvesting. We should save the rainwater so that it can be used for various purposes. Of course, we can use it for cleaning our floor, and we can use for the plants also. So this water can be used, rainwater can be used for various purposes. See, this is our oceans, and see, we are doing this because the chemical things are coming out from the industries, and they're draining into the river, and the river are draining into the seas and oceans. So we are destroying our water bodies. Natural western wildlife exists only in the biosphere, because it has an interaction between the living and living things, in which all the living things exist, that is on a biosphere, and the community in which living and non-living things interact and interrelated with each other, that is known as ecosystem. Natural vegetation and wildlife, both are valuable resources because both are very important for us. They are not only useful for us, सिर्फ हमारे लिए important नहीं है, but they also help in maintaining the balance in nature. Yes, of course. See, I take this small example, very small example. Grasses written by deer, deer is written by lion. If anything is missing, like if lion is missing, then the population of deer will be increased, then the plants will get decreased, of course, because अगर deer की population बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो plants सारे ख़त्म हो जाएंगे. And think, if the deer is miss, अगर deer नहीं होंगे, then lion will not eat the grasses, yes or no? So lion भी नहीं होंगे, deer भी नहीं होंगे. And if the grasses is not there, then deer is not there. If deer is not there, then the tiger is not there, and we also not there, because without plants we cannot live our life, we cannot survive. Okay, so this also maintain our balance in the nature. Major vegetation of the ecosystem are forest, you know very well, grasslands, घासें, shrubs, scrubs, tundra. So these forest, intense Amazon rainforest, tropical rainforest, grasslands, Africa, prairies, pampas, shrubs, scrubs, which found in the desert region, tundra, which is found in the polar regions. Due to deforestation, means because of removing the plants, soil erosion, construction activities, forest fire, tsunami, tundra, landslides, poaching, many species of vegetation wildlife have been become extinct. Because if our house will be destroyed, अगर हमारा घर कोई तोड़ देता है, then where we will live? Yes, we are humans, we can earn money and we can make our house, but उन animals का घर कौन बनाएगा? अगर उन एनिमल्स का हम घर ख़राब करेंगे, if we destroy the forest, it is their natural habitat, then where they will live? वो तो फॉरेस्ट नहीं बनाएंगे ना वो फॉरेस्ट ग्रो कर पाएंगे, ना वो प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे. सो वेयर दे विल लिव? तो वो एक्सटेंट ही होंगे, बिकॉज इफ देयर नो हाउस फॉर देम, नो होम फॉर देम फॉर लिविंग, फॉर सर्वाइवल, देन वेयर दे विल लिव? ओके, सो वी शुड save our resources. We should because natural vegetation and wildlife are the prestige of our country.
so we should save them also. This is deforestation, cutting more and more trees. We can conserve natural vegetation, wildlife by making national parks, because in national parks, wildlife sanctuary, biosphere reserves, there is a special care of plants and animals. In that, they will be saved, and maybe their population will also increase. So the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and the usage of technology are important factors in controlling the standard and way of life people lead a particular place. The land just covers 30% surface of the earth. It is not suitable for living everywhere. Yes, of course, we cannot live everywhere, na? So the place where we live, we can live, that is known as habitable, and the conditions which is not suitable for living are known as inhabitable. Because there are some factors affect habitability of a place, like topography, height from the sea level, climate, fertility of the soil, vegetation. Because think, इफ़ वी टेक अ हाउस, अगर हम घर कहीं पे भी खरीदते हैं, सो वी शुड लुक द लोकेशन, हम लोकेशन देखते हैं, मार्केट्स देखते हैं, वी शुड लुक ईच एंड एवरीथिंग इफ़ यू परचेज अ हाउस, इफ़ यू बाय अ हाउस, सेम एज इज द प्लेस वेयर वी लिव. पहले we should see the topography of that surface, that area, height from the sea level, climate, the fertility of the soil, vegetation. So we see all the features. People cannot live in dense forest or in deserts. Of course we cannot live in dense forest because they are very dense, बहुत घने होते हैं. So there are many animals also there. So they cannot live on high slopes in mountain areas. Of course हम बहुत ज़्यादा ऊँचे भी नहीं रह सकते, and in low lying areas ज़्यादा नीचे भी नहीं रह सकते, where there is a possibility of floods and water logging. प्लेन्स एंड रिवर वैलीज आर द प्लेस वेयर एग्रीकल्चर सूटेड. जहाँ हम रहते हैं प्लेन्स में, वहाँ पे एग्रीकल्चर सूटेड है, एंड वी कैन लिव ईजिली. सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन सच एरियाज. इसीलिए ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इसी एरिया में होता है, यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, बिकॉज इन दिस एरिया there is a suitable condition for living, and these areas heavily populated. The purpose and way in which land is used is known as land use, and land use can be used for agriculture. Yes, of course we can use land in this purpose. Agriculture के लिए use कर सकते हैं हम, forestry, mining, building houses, roads, setting up of industries, various, there are many other purposes. Factors determine the land use include the physical factors like topography, ability of climate, water, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें हम सारी चीज़ें देखते हैं. डेमोग्राफी इज द पॉपुलेशन पैटर्न, कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. ओके, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, तो सारे फैक्टर्स हम लैंड यूज़ के लिए, सारे फिजिकल फैक्टर्स देखे जाते हैं, एंड इट्स वेरी नेसेसरी टू लुक इनटू दैट फीचर्स विच शुड अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ. लैंड यूजली हैज़ ऑनरशिप, हर एक लैंड का ऑनर होता है. इट मे बी प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड. अगर इफ़ इट इज़ प्राइवेट लैंड लाइक आर हाउस, हमारा जो घर होता है, दैट इज़ नोन एज इंडिविजुअल विच इज़ अ प्राइवेट लैंड. बट अ कम्युनिटी लैंड, द कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, ये सब जो कम्युनिटी लैंड होती है, विच इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स विच कैन बी यूज बाय एनी पीपल इन द सोसाइटी लाइक पार्क्स. सो इट इज़ नोन एज द कम्युनिटी लैंड. Since the population always growing at a fast pace, क्योंकि बहुत ज़्यादा population बढ़ती जा रही है, so the land is also increasing demand of land, whereas the availability of land is limited. तो land, लेकिन land तो limited है ना, ये तो नहीं कि population बढ़े तो land भी बढ़ती जाएगी. It cannot be happen. Okay, so land degradation, landslide, soil erosion, desertification, major threat to the environment. ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो रीजन्स हैं, मेजर थ्रेट से हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए. एंड ड्यू टू ह्यूज डिमांड फॉर लैंड, पीपल हैव ऑल्सो स्टार्टेड रिड्यूसिंग फॉरेस्ट कवर इन ऑर्डर टू मेक दैम हैबिटेबल. अब फॉरेस्ट को कम करते जा रहे हैं ताकि रहने के लिए घर बना. आप पहले देखो, पहले कैसे होते थे घर, विलेजेस में बहुत बड़े बड़े होते थे और एक एक फ्लोर होता था. ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज देयर, बट नाउ दिस अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. एक फ्लैट में, एक 50 गज स्क्वायर फीट के अंदर, एक 50 स्क्वायर फीट में, एक 100 स्क्वायर फीट में 5 to 6 फैमिलीज़ रहती हैं. ओके, तो लैंड जो है बहुत ज़्यादा ही, देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर लैंड, दैट्स व्हाई द फॉरेस्ट आर कटिंग, एंड दिस हैज़ रिजल्ट इन डिफोरेस्टेशन. ऑफ कोर्स अब इसका रिजल्ट क्या होगा? डिफोरेस्टेशन है, एफोरेस्टेशन है, रिकॉल्टिंग यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, चेकिंग ओवरग्रेज बाय एनिमल्स. दीज आर द मेथड विच वी कैन कंजर्व आवर वेरिएबल नेचुरल रिसोर्सेज. The word soil refers to a thin layer of grainy substance covering with the surface of the land. This layer is made of organic matter, minerals and weathered rocks. The long process of weathering is responsible for formation of soil. ये जो weathering का process है ना, weathering is a process, there's a rocks, okay, one rock is, एक rock है, rocks होती हैं,
and when there's a fluctuation in temperature, means rainy, sun, cold, so there's a fluctuation of temperature, and because of that there's a crack between the rocks के बीच में crack आ जाते हैं, and in that cracks the plants grow, because you आपने देखा ही होगा जो plants है it need just conditions, उसे suitable condition चाहिए, they can grow anywhere. So in that condition, in that suitable condition they grow, and when they spread their roots, उनकी जब roots spread होती हैं, then they break the rocks also, and then the rocks get into smaller pieces, and when they stuck with each other, means एक दूसरे टकराते, then it forms into smaller pieces, and then the soil form, and it takes thousands of years to make. Okay. The word soil refers to thin layer. This is same. Weathering refers to breaking up and decaying of exposed rocks. This breaking up and decaying is caused by temperature fluctuation, जिसमें मैंने अभी आपको बताया. Frost action means the जैसे ice भी होती है, ice भी rocks के अंदर घुसती है, तो वो spread होएगी, then they will break the rock. Okay. Plants जो grow होते हैं, animals उसके अंदर रहते हैं, even human activity also. And due to weathering in thousand of years soil form, तो soil thousand of years से बनती है, and the nature of parent rock and the climatical factor are major factors of soil formation. These are the responsible for soil formation. Other factors include topography, role of organic material, time taken for the composition of soil formation. This is a flow chart. You can see factor affecting soil formation: parent rock, climate, time, flora, fauna, and relief. Parent rock determines color, texture. Climate influence rate of weathering. Time influence thickness of soil. Flora and fauna affect rate of humus formation, means how the humus made, and determination accumulation of soil is the relief. Soil erosion and depletion most major threat to the quality and resourcefulness of soil. Degradation takes place by both human and nature factors. Yes, of course, degradation सिर्फ और सिर्फ human activities की वजह से नहीं होती है. It can cause because of natural activities also. Deforestation, overgrazing, overuse, which we have done. Mulching, we have done it. Covering of bare ground between the plants with a layer of organic material like straw. This helps in retaining soil moisture. We have seen the picture also. And the farmers, this is the mulching. Farmers use stones, grass and soil to build barriers along. This is contour barriers, which we have seen. Okay. Terrace farming is a method of farming in which broad flat steps or terraces are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops, and this helps in controlling soil erosion. इससे soil erosion बहुत कम होता है. See, अगर हम ऊपर पानी डालते, जैसे स्टेयर्स हैं घर में, ठीक है, हम टॉप पे पानी डालते हैं, नीचे तक बॉटम तक वाटर आता है. सेम एज माउंटेन्स में अगर वाटर होगा, मीन्स रेन आएगी, दैन दे विल ब्लो द लैंड विद द रेन वाटर, जिसकी वजह से लैंड सॉइल इरोजन होगा. सो वहाँ पे प्लांट्स ग्रो होने से लैंड जो सॉइल है वो इरोज नहीं हो पाती, बिकॉज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, वो बाइंड करके रखते हैं सॉइल को, उसे सपोर्ट करते हैं. दैट्स वाई द सॉइल गेट नॉट इरोज व्हेन इन द टेरेस फार्मिंग. Okay, this is the mulching process. Intercropping, different crops are grown alternative rows and sown at different times to protect the soil from being washed away by rain, so that it will not be washed away. Plowing parallel to the contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down a slope is called contour barrier. Rows of trees are planted in certain areas to check wind movement. मैंने बताया था आपको shelter beds के अंदर हम plants को grow करते हैं so that we can check the movements. And also the trees support to bind the soil. जब वो रेन आती है या विंड उड़ती है, तो उस टाइम पे जो लैंड है ना, वो उसकी हेल्प से जो प्लांट्स हम जो ग्रो करते हैं, ट्रीज हम जो ग्रो करते हैं रोज़ के स्टार्टिंग में, तो वो बाइंड करके रखते हैं सॉइल को, जिसकी वजह से वो ब्लो नहीं हो पाती है. ओके. वाटर कवर अबाउट 75% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, देयरफॉर द अर्थ इज कॉल्ड द वाटर प्लैनेट. ओशन वाटर इज सलाइन, येस, एंड नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, फिट नहीं होता ह्यूमन कंजप्शन के लिए. फ्रेश वाटर इज जस्ट अबाउट 2.7% टोटल वाटर, सो फ्रेश वाटर इज़ वेरी स्कार्स, बहुत कमी है. So we use water for a lot of purposes. Life is impossible without water. Yes, of course. Water shortage is a common problem in many parts of the country, and it may be consequence of variation rain patterns or contamination of water resources. Means rain patterns है, कहीं पे ज़्यादा rain होती है, कहीं पे कम rain होती है, और contamination is polluted of water resource. If we pollute more and more water, then we will not get fresh water. हमें कहाँ से मिलेगा fresh water? अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा गंदा करते जाएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स डलते जाएंगे, केमिकल्स इंडस्ट्री से निकलेंगे, देन हाउ वी विल गेट द फ्रेश वाटर? बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर वाटर, वी आर पॉल्यूटिंग आवर वाटर, देन हाउ, फ्रॉम वेयर वी विल गेट द फ्रेश वाटर? So steps need to be taken to conserve water. Water is renewable.
बट इट्स ओवर यूज़ एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़. रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, बट उसका ओवर यूज़ और पॉल्यूशन जो है हमारे लिए अनफिट बनाएगा. सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल एटसेट्रा पॉल्यूट विद नाइट्रेट्स, मेटल, पेस्टिसाइड, ये सारे इसके अंदर मिक्स होते हैं which pollute our water. Natural vegetation, wildlife exists in the biosphere. The supporting an interdependent life system can exist in the biosphere is called ecosystem. जो interdependent होता है living beings का एक दूसरे पर depend होना, that is known as ecosystem. प्लांट्स प्रोवाइड अस विद अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, शेल्टर टू एनिमल्स, लेबरेट ऑक्सीजन हमें देते हैं जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. प्रोटेक्ट सॉइल एंड गिव अस मच ऑफ फूड, और बहुत फूड भी देते हैं ऑफकोर्स, बिकॉज आपके घर में अब जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं सारे कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से तो मिलते हैं ना. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो वी शुड प्रोटेक्ट आवर प्लांट्स एंड वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा इफ़ वी ग्रो द प्लांट्स, इट विल गिव benefits to us. Animals, birds, insects are also helpful in lot of ways. Of course, insects like bees provide us honey, and bird like vulture cleans the environment and उनको clean करते by feeding on dead livestock. And vegetation depends on temperature. Vegetation temperature पर depend करता है. Yes, देखो आप यहाँ के अगर vegetation देखोगे तो अलग तरह की है. If you go in mountain areas तो वहाँ की conical shape की होती है. Polar regions में बहुत कम होते हैं. टुंड्रा वहाँ पे प्लांट्स होते हैं. एंड द डेजर्ट रीजन देयर इज अ कैक्टस, स्पाइंस वाले होते हैं, थोनी बुशेस होते हैं. सो डिपेंड्स अपॉन देयर क्लाइमेट, देयर वेस्ट, द एरिया, द वेदर. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बोथ डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया. जैसे यहाँ के अगर आप डॉग्स देखोगे उनका इतना थिक फर नहीं होता है, बट इफ़ यू गो इन माउंटेन एरियाज दे हैव अ थिक फर सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड. सो दिस इज़ फ्रॉम द नेचर. हैवी रेनफॉल सपोर्ट्स ह्यूज ट्रीज. ज़्यादा ज़्यादा अगर रेन होगी तो ऑफकोर्स वहाँ पे ट्रीज़ बहुत ज़्यादा, जो रेन फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, वहाँ पे हमेशा ही हरे भरे रहते हैं. वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है एंड बिकॉज ऑफ ट्रीज देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ देयर. वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है. लो मॉइस्चर मीन्स लेस डेंस फॉरेस्ट, जैसे डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं. स्मॉलर ट्रीज होंगे जैसे ग्रासलैंड जो होते हैं. In desert we have thorny shrubs and scrubs because if there is a leaf then there will be a transpiration process. Transpiration process होगी leaves के थ्रू. जैसे वाटर वेपर के फॉर्म में जो वाटर होगा वो लॉस होगा. इफ़ देयर इज़ अ लॉस ऑफ वाटर तो उन कैक्टस को कहाँ से वाटर मिलेगा. दैट्स वाई दे मॉडिफाई देयर लीव्स इनटू स्पाइंस. ओके. Forests are classified into two types, evergreen and deciduous forest. The first type never shed the leaves, कभी अपने leaves को shed नहीं करते हैं, but the second time shed the leaves at a particular time of the year. वो एक साल में एक बार जरूर उनकी shed होती है. And both these types are classified into temperate and tropical based on the location also. उनके location पे हिसाब से वो tropical में भी और temperate में भी divided हैं. There are huge concerns about the conservation of these important resources. So we must contribute to this. Natural parks, wildlife sanctuary, biosphere reserves. These are the ways so that we can protect our vegetation and wildlife. Conservation of plants and animals is a moral duty of every human being. It's not about the natural vegetation or the government will work. सिर्फ government work नहीं करेगी. We as a human, we should also do our work. We should also do our duty as a human being. Tropical evergreen forest, tropical deciduous vegetation. These are the keywords. Land. The surface of the earth which is solid and covers about 30% of the total surface of the earth is called land. Land use, जो हम यूज़ करते हैं land, that is not land use. Private land जो हमारी खुद की होती है. Community जो सारे यूज़ कर सकते हैं. Deforestation, cutting down trees. Afforestation, planting more trees. Soil जो thin layer होती है, grainy substance जो soil की अर्थ के ऊपर होती है. Weathering मैंने आपको बताया प्रोसेस जो rocks का erosion होता है and it breaks into a smaller rocks, soil. पेरेंट रॉक जो ओरिजिनल रॉक होती है जिससे सॉइल बनती है. मल्चिंग जो एक कवरिंग होती है प्लांट्स और ऑर्गेनिक मैटर की सो दैट इट कैन द सॉइल कैन रिटेन इट मॉइस्चर. टेरेस फार्मिंग सीढ़ीनुमा खेत होती है जो हम माउंटेन एरियाज में करते हैं. इंटरक्रॉपिंग अल्टरनेट रोज को क्रॉप करना. काउंटर प्लॉइंग पैरेलल हील्स जो स्लोप हम बनाते हैं. एंड शेल्टर बेल्ट्स, दीज आर द शेल्टर बेल्ट्स. इसके जो क्या होता है रोज़ के सामने जो रोज ऑफ ट्रीज़ होते हैं, रोज ऑफ क्रॉप्स होते हैं, उनके सामने एक ट्रीज़ उगाए जाते हैं सो दैट दे कैन चेक द मोमेंट एंड ऑल्सो हेल्प इन रिटेनिंग एंड बाइंडिंग द सॉइल ऑल्सो. फ्रेश वाटर जो हमारे लिए सही है. वाटर साइकिल यू नो वेरी वेल, जो इवेपोरेशन होता है जिसके थ्रू वाटर चलता रहता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को सेव करना. बायोस्फीयर इट इज़ अ नेचुरल जोन वेयर ऑल द स्फीयर्स मेट. इकोसिस्टम इट इज़ अ कम्युनिटी वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट एंड इंटररिलेट विद ईच अदर. नेचुरल वेजिटेशन those plants or those trees which grow on their own without any interference of the human beings. Wildlife which is very important for us, it is the prestige of our country.
Scavenger, bird or animal which feeds on dead livestock. Tundra, the type of vegetation found in cold regions like Arctic is called tundra region. Evergreen forest, the forest which never shed the leaves. Deciduous, which shed their leaves at a particular time. Van Mahotsav, it is a social program of planting trees organized at community level, and it's called Van Mahotsav. National parks, where the ecosystem, they protect the ecosystem for the present and future generation. Wildlife sanctuary, where wildlife is saved. Biosphere reserves, where these are protected and areas through a global network and intended to demonstrate the relationship between conservation and development. So that's it. This is chapter number 2 of geography. See my video, enjoy it, learn it. Thank you.